चलो क्या? Good morning, everybody. Good morning, sir. Let us start with a new chapter, that is co-ordination and integration. Correct? Yes. Let us understand the meaning of the word coordination. Okay. The other English word for coordination is what's the word? Synchrony. Synchronized. Hindi में it is called तालमेल. You understand the meaning of the word तालमेल? Okay. In English it is called a synchrony. Coordinated manner. This word is used when there are multiple events taking place at one time. And all these events have to take place in a synchrony, coordination, तालमेल. Example, an orchestra. Orchestra में एक ही instrument बजता है कि बहुत सारे बजते हैं उसमें? Okay. So when they play their instrument, सब लोग अपना अपना tune play करेंगे, हाँ, लेकिन एक साथ coordination में होना चाहिए. बराबर है ना? What will come out of the orchestra is noise, not music. आपको क्या चाहिए orchestra में से? और सब लोग अपना अपने हिसाब से ही बजाते रहेंगे, तो क्या होगा? Orchestra का बज जाएगा बैंड. समझा ना मेरा बात? So काफी बार हमने देखा ऑर्केस्ट्रा में कि you will find one person standing in the center waving his hands like this. Do you see that? Okay. His name is conductor, right? क्या कहते हैं उसको? Every person has to follow him. Okay? और उसके कमांड्स के हिसाब से अगर आप प्ले करोगे, उसके कमांड्स के हिसाब से अगर आप प्ले करोगे, then it will be music or else it will be noise. Okay. Why am I giving you this example over here? Because even the human body is made up of multiple organs, just like the musical instruments in an orchestra. मेरा language समझ में आया? कि जैसे कि orchestra में बहुत सारे क्या होते हैं? Physical instruments होते हैं. इंसान की body में अलग-अलग क्या होते हैं? और सब organs एक ही साथ में एक ही टाइम में कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं. तो जब ये लोग काम कर रहे हैं, should it be in a random manner or a synchronized manner? So don't you think you also require some conductor? Yes. Have you got the point that I'm trying to make? Yes. And that conductor, which is going to control your organs, is the neural system and the endocrine system. What are the two systems, guys? Neural system and endocrine system. The neural system and endocrine system. Okay? The neural system controls the organs through specialized cells which are called as neurons. And these neurons control the organs with the help of electrochemical signals, which I have told you many times as action potentials. Okay? Whereas the endocrine system will control the organs through the help of endocrine glands or the endocrine cells. And they release chemical messengers which are called as hormones. The activity of the hormone is usually slow, but it is long lasting. Whereas in the case of neurons, it is usually fast, but it is short-lived. Okay? So if a speeding car
is coming towards you, you react immediately, right? With the help of your neural system. But after that action is over, do you keep on doing that like a boomerang video? No. आपका जो height बढ़ा, secondary sexual characters आए, it was through hormones. Was it a rapid change or a slow gradual change? Slow gradual change. Is it going to be short-lived or long-lived change? Long-lived change. I hope you got covered, everybody. Yes. That is how they differ. Okay. Now the common question asked is, okay, why do we require the endocrine control if you already have a neural control? अगर हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, तो फिर अलग से एंडोक्राइन सिस्टम की क्या जरूरत है? तो उसका आंसर ये आता है कि the hormones are able to bring about changes inside the cell. Hormones are able to bring about intracellular changes within the cells, which is not done by the nervous system. So, is the nervous system able to reach all the parts of the body? No. The neural system can't reach all the places. By that I mean that it will not be able to reach inside the cells. So if you want to have a control inside the cell, that change is controlled by whom? Hormones. So what is the need of an endocrine control irrespective of the neural control? For controlling intracellular functions. Okay? You can always understand this manner that अगर आप एक बिल्डिंग में रहते हो तो सोसाइटी आपके घर के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकता. That is the control of your mom and dad. So the society का control is in the society, not inside the house. I hope you got it, everyone. Okay. So the same manner, it is the hormones which can bring about intracellular changes. And there are many places where the neurons cannot reach, where even the hormones can go. Got my point? And that is the reason why we have a endocrine control in spite of having a neural system. Is this point clear, everyone? Yes. So here, I need to remind you of the definition of the word gland that I have told you before also. Does anybody remember the definition of a gland? Yes? Every gland is not ductless. How would you define a gland? Yes, Omkar? So the part which controls the secretion. Secretes. The part which secretes something. It can either be one cell or it can be group of cells. Okay? And what is the speciality of these cells? They synthesize and they release. ये word याद है आप लोग को? दो word के साथ. One was synthesis and the other word is what which लोग? Release. Okay? So when it is synthesis and release, then it is called what which low? Secretion. So what is a gland? Gland is either one cell or it is a group of cells which performs the function of secretion. And what is secretion? Synthesize and release together is called as secretion. Is the definition clear with everybody? Yes. Then I have told you that there is a type of glands. This is a gland which is going to secrete its secretions directly into the bloodstream. Such a gland is called as a gland of internal secretion. Okay? These glands are ductless and we call them as which gland, Muchlo?
They are called as endocrine glands. Okay? And the secretion of endocrine glands are called as hormones. So hormones are the secretion of endocrine glands or endocrine cells. Okay? Clear everyone? What is a gland? It is a cell or a group of cells which performs secretion. What is secretion? Synthesis and release is called as secretion. If it releases the things into the blood without the use of ducts, it's called as an and that secretion is called as a hormone. Clear everyone? Yes. Okay. Now, the study of hormones and the endocrine system is called endocrinology. Okay? And the doctor is called as an endocrinologist. It's a super specialty. After you do your MD in medicine, you do endocrinology. It's a super specialty. समझा? उसमें भी pediatric endocrinology ऐसे अलग-अलग specializations. What is a hormone? How do we define hormone? Okay, a hormone is defined as a intercellular chemical messenger, non-nutrient, release in trace amount. तीन नए words हैं यहाँ पे. It is a non-nutrient. It is a intercellular chemical messenger and it is released in trace amounts. Okay? So, what are the things that come under the definition of a hormone? It's a non-nutrient intercellular chemical messenger required in trace amount. Required in trace amount. Clear everybody? Yes. Shall we continue? Yes. Okay. What is non-nutrient? ट्रेस अमाउंट क्या होता है? अब मैं कौन से वर्ड पे आया? Non-nutrient. फिर अगले 2 मिनट में किस पे आऊंगा? केमिकल मैसेज. फिर और 2 मिनट के बाद किस पे आऊंगा? ट्रेस अमाउंट. अगर टोटल कितने मिनट है? 5. तो अपने को पता चलेगा ट्रेस अमाउंट के. समझे हो? 2 मिनट रुक जाना है बेटा. तेरी क्यूरियोसिटी बहुत पसंद आई मुझे. थोड़ा सा और एक लाइन पे जाए तो तेरे को मजा आएगा. तेरे को नॉन न्यूट्रिएंट समझा? ये गलत समझा ना. समझा ना मेरा बात. इसी तरह ना तो सब समझाता है. ग्लूकोज है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स है. इससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलता है. नरिशमेंट समझ में आता है? इससे आपके बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स बनते हैं. इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट. हार्मोन इज नॉन न्यूट्रिएंट. योर बॉडी विल नॉट ऑब्टेन एनर्जी आउट ऑफ इट और योर बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूज इट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द नॉन न्यूट्रिएंट. आया मेरा बात समझ में? Yes. हार्मोन इज अ नॉन न्यूट्रिएंट. ओके, इससे आपका बॉडी एनर्जी डिराइव करेगा? नहीं. बिल्डिंग ब्लॉक जैसे यूज करेगा? नहीं. सो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक और चीज, क्या कोई फूड खाने से आपको हार्मोन मिलता है? नहीं. आपके बॉडी को अपना हार्मोन खुद बनाना पड़ता है. इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स हार्मोन के इंजेक्शंस दे के फूड को मॉडिफाई करते हैं, वो अगर हार्मोन्स ट्रेस अमाउंट छोटे अमाउंट में भी अपने बॉडी में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. अडल्ट्रेशन करते हैं. अडल्ट्रेशन जैसे लोग क्या करते हैं, काव है, बफेलो है, उसको इंजेक्शंस देते हैं. कौन से हार्मोन का होता है? ऑक्सीटोसिन. उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है? बढ़ता है. अब रेसिडुअल फॉर्म में सब अपने बॉडी में भी आने वाला है कि नहीं?
समझा? Yes. It is a intercellular chemical messenger. What is the word? Intercellular chemical messenger. ये एक सेल है, इसका नाम है एंडोक्राइन सेल। What is the name? Endocrine cell. और ये दूसरा सेल है, इस सेल का नाम है टारगेट सेल। ओके, द एंडोक्राइन सेल will release a hormone and the target cell will show a receptor protein. What it will show, Chilo? Receptor protein. Can I say the shape of the target cell and the receptor protein is the same? Yes. No, it is complementary, like a lock and a key. Not same, it is complementary. So specific hormone will bind to a specific target cell ka receptor. As soon as that happens, a particular change will take place in the target cell. What my point? So can I say this hormone is responsible for a particular change in the target cell, and that change is the message carried by the hormone. आपको मेरा भाषा समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। ये एंडोक्राइन सेल ने क्या सिक्रीट किया? बोलो, मर गए। सॉरी, इसको एडिट कर देंगे हम लोग। क्या रिलीज किया? हार्मोन ने किस पे एक्ट किया? टारगेट सेल। देखो रिसेप्टर्स का शेप सेम है कि चेंज हो गया? जैसे ही हार्मोन ने एक्ट किया इसके ऊपर, तुरंत टारगेट सेल ने सेम रिस्पॉन्स दिखाया क्या अलग? तो हर एक हार्मोन में छुपा हुआ मैसेज है, जैसे कि हर इमोजी में होता है कि नहीं? अगर आपको मिलता है ना बत्ती सी तो उसका मतलब क्या होता है? छोटी सी स्माइल। ऐसा आंखों में से पानी रहेगा, क्या होता है? बहुत हंसा है, बहुत ही सही कि नहीं? कैसे every emoji in a target cell brings about a different response. चिराग सही है मेरी बात? So that is why every hormone is a intercellular chemical messenger. हाँ, आप लोग मेडिसिन में जाओगे तो कुछ हार्मोन्स को बोलेंगे ऑटोक्राइन, ये इंटरसेलुलर नहीं होते, ये एक ही सेल सिक्रीट करता है, उसी सेल पे काम करता है। लेकिन अभी के सिलेबस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इंटरसेलुलर, मतलब एक सेल सिक्रीट करके नियर बाय सेल पे एक्ट करता है। समझा? ट्रेस अमाउंट वाला निभा रहा हूं बेटा। कौन सा अमाउंट? ट्रेस अमाउंट, मतलब रेहान मुल्ला की पढ़ाई। अब बना देखो कैसी चल रही है? एकदम तिनके की, मतलब हार्मोन्स में जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा है? बहुत ही कुंचुन क्वांटिटी, नैनोग्राम, एकदम कम क्वांटिटी में चलता है, बहुत ही कम। I have got my point. So why are hormones required such a small quantities and they are enough? Because they work like a domino effect. You know dominoes? Yes. What's a domino effect? Tell me. ऐसे कार्ड्स लगे हुए रहते हैं, आपने एक कार्ड को उड़ा दिया तो सारे गिर जाएंगे। आया ना? ये जो फेक मैसेजेस है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, वो भी तो वैसे ही फैलते हैं। एक ने डाला ग्रुप में, जहाँ पे 200 फुकट लोग हैं, वो लोग ऐसे ही चेन रिएक्शन बढ़ाते गए, पूरे सामने में क्या हो गया? फैल गया कि प्रारंभ में लेवाइस का जीन्स का सेल लगा है और शाम को सब आगे जमा हो गए इधर। तो वैसे ही एक सेल है, उसके ऊपर कितना हार्मोन बाइंड किया? एक।
तो अंदर कितने मेटाबोलाइट जनरेट हुए? 100 ने कितने? 1000 ने कितने जनरेट किए? 10,000 ने कितने जनरेट किए? 1,00,000। मतलब 1,00,000 मेटाबोलाइट जनरेट करने के लिए 1,00,000 हार्मोन्स की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। कितनी जरूरत पड़ी? 1। तो हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड कुंचुम क्वांटिटी। कुंचुम मतलब बहुत ही कम। ट्रेस नानोग्राम मतलब clear everyone? Should we continue? ना ये डेफिनेशन याद रहेगा, इसके ऊपर भी PYQ आ चुका है। Second, hormones are unlike enzymes. Our hormones unlike enzymes. सिद्धियानी लेक्चर के पहले ये सब करने का अभी बोलता हूँ मैं तेरे को। How are they? Unlike enzymes. मतलब कुछ प्रॉपर्टी इनकी और एंजाइम्स की अलग है, विपरीत है। जैसे कि number 1, enzymes do not participate in cellular metabolism, whereas hormones will participate in cellular metabolism. Hormones will participate in biomolecules. You have studied, bachcho. Yes. Okay, enzymes do not take part in the cellular reaction. They increase the rate of the reaction. But hormones will take part. Like for example, I'll give you 2 simple examples. झगड़ा हो रहा है, मतलब कौन होगा वहां पे? एक है सिद्धियानी और दूसरी है आकांक्षा। अनुष्का और सिद्धियानी के बीच में क्या हो रहा है? मैंने जाके आग लगाई, आकांक्षा को भड़काया। ओके, तो उसे क्या किया? बहुत पीटा पकड़ के। अब मैंने किसके साथ काम किया? एंजाइम के साथ। मैं पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं तो सिर्फ भड़काने का काम करके निकल गया। अच्छा, सेकेंड टाइम मैंने सिद्धियानी का साइड लिया, हम लोगों ने दोनों मिलके इसको पीटा, तो मैंने किसके साथ काम किया? सो हार्मोन्स जो होते हैं वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, अनलाइक जो पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ लो? Enzymes are reused by your body again and again, whereas a hormone after its use is broken down and is thrown out through your urine. समझा मेरा बात? That a hormone after its use is broken down and it is excreted out via your urine, most common route. Okay, I have got my point. And this is what we use for testing of hormones many times. Like if we want to know whether the woman is pregnant or not, then we detect the presence of a hormone called HCG in urine. If the urine of the woman has HCG, then the test is positive. Because HCG is produced by the embryo, placenta of the embryo, and it is an indicator of what? Pregnancy. See, many hormones are also used by athletes, sports person, for cheating, doping, doping. Okay, one of them is steroids. One of them is what? The other also growth hormones, erythropoietic factor, many hormones are there. So how do these government agencies catch them, those who are cheating? They do their urine sampling. You must have heard that, right, Kuchilo? Like the normal level of
testosterone in a male, say for example it is 1000, okay, and if this particular athlete is showing 2000, definitely he is doing what? Doping, cheating. So you do take the urine test. But these athletes are also become very smart. They know the normal level is 1000, their own level is 600. So will they take 2000 or only up to 1000? Up to 1000. समझ लगा क्या? The government agencies are more smarter. They will do their testing both in season and off season. Off season the level is 600, in season it is 1000. अचानक से 400 कहाँ से rise हो गया? ऐसा चलते रहता है, cat and mouse का game है. I have got my point. That is why those athletes who participate in Olympics and in football, the World Cup everywhere, they have to undergo rigorous testing. आया बात आपको समझ में? So, don't be scared of that. What is it? None? None is there? See, like that only there is small. No? So it is. वो नन भी आई ना कंटा के भाग जाएगी बोले किर करते बड़बड़ लगाते रहते भाग जाएगी नन. तुम्हारे क्लास में अगर नन भी आ गई ना, नन बोलो ना भूत है नन, छोड़ जाए तो क्लास को कंटा ही दिला. तो इतना परेशान करता है वो गोटे और वो सब. So it is broken down and excreted via the urine. अच्छा, what is the chemical nature of an enzyme? Protein, mostly proteins will. पहले कैसे स्कूल में आपको बोलते थे कि all enzymes are proteins, पर अभी कुछ RNA भी डिस्कवर हो गया ना, जो किसका काम करते हैं? Enzymes. तो हम लोग क्या बोलते हैं? Enzymes are mostly proteins, but in the case of hormones, it's a very diverse group. Some of them are amino acid derivatives. Some of them are steroidal in nature. Some of them are peptides. Some of them are larger proteins. Few of them are even gaseous. So hormones are not only of one type chemical nature. It's a diverse group, unlike enzymes, which are all what proteinaceous. I think the class is following what I'm saying. Yes. Pakka? Let's बढ़े आगे चलो. Okay. So do the hormones participate in cellular metabolism? Yes. Are they stored in the body after use, or they broken down and thrown out? Why are all hormones proteins? No, they can be amino acid derivatives, they can be steroidal, they can be peptides, they can be proteins, or they can be gaseous forms. Yes or no? Yes. Then, next is what? Let us talk about a list of endocrine glands in the human body. इसकी बात करेंगे? List of endocrine glands in the human body. Okay? Now see. Do you know of any gland before? Yes. Can you tell me? बोलो. चलो, let's do one by one. Let's start with the human brain. Take him with you only ना जय. तो गोदी में बिठा उसको और दोनों साथ में बैठ के एक साथ देखो. हाँ, इतना मिस करते रहते हैं उसको. ठीक है? बाबू सोना आप ध्यान दीजिए. ठीक है? तो ये कौन है? ब्रेन. ब्रेन में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड. कितलो? 3. बरोबर ना કેટલું? 3 છે 3. બાર તો મુસ્તફાને શીખાય ને ગુજરાતી ચલો. ગુજરાતી મુસ્લિમ. Like I am Maharashtrian Muslim, Gujarati Muslim. तो
ये वो बाद में पढ़ाई करेंगे। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, यही तो लेके जाएंगे, बाकी पंचायत सब बजा कर जाएंगे, बाकी सब पंचायत बात। देखिए कहाँ दोस्तों, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कितने ग्लैंड्स हैं? तीन। वन इज hypothalamus, okay, and here we have a gland which is called as pituitary gland. And ऊपर देखा, चलो who will tell me the name of this gland? हाँ? हंसत क्या लग रही है? ऐसे laughing हो रही है, जब खुश हो गया वो बेचारा। Pineal and pituitary. सही है guys? In the neck region, हाँ, बोल नील कितना है? बोल भाई शर्मा मत, इतना भी फॉर्म में चल रहा है तो शुभनम गिल जैसा। शब्दम गिल, शब्दम गिल। तो in the neck region what do we have? Thyroid. And on the top of the thyroid we have four beautiful glands which are called parathyroid. Parathyroid. In the thoracic cage, you remember the aorta is? In front of the aorta, we have thymus. Even the cells of the right atrium are known to release hormones. Okay? Then we have the cells of the gastrointestinal tract, cells of the GI. Should I write the full word? Do you know what you know? This gastro, मतलब stomach. Intestinal, मतलब intestinal tract. Okay? Then here beneath, below the stomach, you have pancreas, a very famous gland called pancreas. Then also some cells of the kidney, and on the top of the kidney also an important gland called adrenal. Okay? Also, the liver is known to release some hormones. Okay? In the case of females, there is ovaries, and in the males there is testicles. Together it is called gonads. So gonads are also example of what? Endocrine structures. I hope you got it, everybody. Yes. So now from this, what can I conclude is that some of the things are organized endocrine bodies, and in addition to these, some other organs have got endocrine cells. Okay? Like if you see thyroid, pituitary, parathyroid, adrenal, they are proper what which you know? Organized endocrine glands. क्या कहेंगे उनको? Organized endocrine glands. Give me yes or no? Yes. ये पॉइंट समझा कि नहीं चलो, लेकिन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स हैं, किडनी में सेल्स हैं, राइट एट्रियम में सेल्स हैं, ये प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं कि डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सेल्स हैं?
इधर उधर बिखरे हुए कौन है ये? एंडोक्राइन सेल्स। समझ में आया सबको? क्या बोल रहे हो? हाँ, तू बोल रहा है क्या? बोल बोल, खड़ा है, खड़ा है। हाँ, तो क्या है सब, क्यों बोल रहा तू? मैं इसके बुक में लिख रहा हूँ इसलिए वो बोलता है। कुछ बोल रहे थे क्या उसका? कौन सा मैन? नया नाम रख दे ब्रो। कौन नाम रखना है उसका? मैंने समझ में आया था? So hormones are secreted by organized endocrine organs, proper endocrine organs, as well as they can be secreted by discrete, diffuse endocrine cells. Point ध्यान में रखिए. Okay. All these endocrine glands, they are controlled by a gland called pituitary gland. So the pituitary gland controls the endocrine glands. कौन कंट्रोल करता है endocrine glands को? Pituitary gland. That is why the pituitary is called as the master gland of the body. Okay. Omkar, what happened? And pituitary is controlled by whom? Hypothalamus. Okay. That is why the hypothalamus is called the real master. So who is the real master of the endocrine orchestra? Okay, and the master gland is what? Pituitary. Okay. Now who controls the hypothalamus? Hypothalamus itself is a part of the brain. Kidney. Yes. Very good, Jadhav. Very good. Huh? कुछ तो बोल रहा है वो, गैग था, गैग मतलब जोक था उसका. The hormones are controlled by what, guys? Feedback mechanism. What do you mean by feedback? What do you mean by feedback? बोल what is feedback? अरे एक है बोल ना था. बोल कोई भी प्रोडक्ट यूज करते तो बराबर ये बात. हाँ, what is Jay? What is he? What is he? mechanism regulates the amount of secretion of नंदिनी तू amount बोला, नंदिनी time बोल गई, time. Amount and time, the rate of secretion by dy by dx, the integral form of the equation. Okay? अच्छा. अभी कोई लेटेस्ट हिंदी पिक्चर रिलीज हुई हो? चलो जवाब, ठीक जवाब. Let's talk about जवाब. Okay? Now now if I ask you, चलो जवाब कैसे पिक्चर है? तुम लोग बोला सर एकदम घटिया पिक्चर, और मैं जाके देख के आया. सुनो पहले बात सुनो, बड़ा कंसेप्ट सुना है आपने. मैंने आपसे पूछा जवान कैसी मूवी है, मतलब मैंने फीडबैक किया जवान मूवी के बारे में. आप लोगों ने क्या बोला? सर एकदम घटिया पिक्चर, और मैं जाके देख के आया. दूसरा ग्रुप मुझे बोला कि सर एक नंबर पिक्चर है, देख के आओ. मैं देखने नहीं गया. दोनों सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्स जो है वो सेम टाइप का है कि जो मुझे फीडबैक मिल रहा है मैं उसका एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ? अपोजिट. आप समझे मेरी बात? जो भी मुझे क्या मिल रहा है? फीडबैक. मतलब मूवी बढ़िया है मैं देखने, मूवी घटिया है मैं देखने,
मतलब मेरा रिएक्शन जो है, मेरा जो एक्शन जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है टू द फीडबैक। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जैसे हम लोग रोज बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तुम्हारा फीडबैक कैसे चलता है? नहीं समझा मेरा बात? अच्छा, व्हाट वुड बी अ पॉजिटिव फीडबैक? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। क्या दोस्तों? व्हाट डू यू मीन नेगेटिव? नेगेटिव मतलब जो भी सिग्नल आया रिएक्शन उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल आया कि एक हार्मोन कम है तो हाइपोथैलेमस उसको बढ़ाएगा, और अगर उसके पास सिग्नल आया कि एक हार्मोन बहुत ज्यादा है हाइपोथैलेमस उसको, ये दोनों टाइप को क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक। समझा सबको नेगेटिव फीडबैक? यस और नो? अच्छा, व्हाट विल बी अ पॉजिटिव फीडबैक? जैसे मैंने बोला, आपने मुझे पूछा सर मुझे कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए दिन में, तो मैंने बोला आधा घंटा तो आपने 5 घंटा पढ़ाई की। ये कैसा फीडबैक हुआ? पॉजिटिव। समझा मेरा बात? आप मेरे पास आए, मुझे सर मुझे क्या करना चाहिए, तो बोला पढ़ाई छोड़ दे, तो आप सामने की बहुत बड़े गुंडे करके ये आपके कौन सा फीडबैक नहीं है? पॉजिटिव। मतलब अगर हाइपोथैलेमस के पास एक सिग्नल आया कि एक हार्मोन के लेवल हाई है तो उसको कम करेगा कि और बढ़ा देगा? ये किसका एग्जांपल हो गया? पॉजिटिव फीडबैक। सो कितने टाइप के मैकेनिज्म होते हैं बच्चों लोग? दो। कौन से? एक होता है नेगेटिव फीडबैक and the other is called which feedback which लोग? Positive feedback. Did you all follow? So who controls the hypothalamus? It is a self-regulated mechanism which is called as feedback mechanism, positive or negative feedback. समझ रहे हो? मतलब वो रेगुलेशन बोलते हैं उसको, जहां पे उसको अगर कोई हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हुआ मिला तो अगर फंक्शन के हिसाब से, यूज के हिसाब से उसको बढ़ा भी सकता है, नेगेटिव फीडबैक होगा उसको क्या करेगा? चलो कम करेगा। ओके, सो हार्मोन्स आर secreted by only the glands or even there are cells who can secrete it? How do you define a hormone? It's a non-nutrient chemical messenger required in trace. You know what is trace? ट्रेस का मतलब क्या होता है? कम। अभी देखो ट्रेस अमाउंट में समझा? नहीं। अच्छा अमाउंट। ओके, then yes Vanushali, tell me 2 properties of hormones that are unlike enzymes. वो लोग कौन है भाई? फिर से वो लोग hypothalamus is a part of your forebrain. Which part of your brain? Forebrain. Okay. So remember that. क्या हो गया? ये मेरे को बोला था। उसको बोल दिया। ओके, ये जितने भी हम च्युइंगम खा रहे हैं ना, पहले तो तू क्या होगा? ओंकार, बाबू शोधा तू क्या होगा? Has a part which is called as diencephalon. क्या उसको? Diencephalon. Let me say that this is a diencephalon. Okay. Now, do you see a cavity in the diencephalon? Yes. Now there are 2 walls of the diencephalon, bilateral walls, which are called thalamus. What do you call them? Thalamus. And the roof is called epithalamus, and the floor is called hypothalamus. So how many parts do we get? 3. One is the walls, which is called the thalamus. The floor part is called hypothalamus,
and the roof part is called the epithalamus. All the three parts together is called what? Diencephalon. Okay? So, I will go like this. That your forebrain, it has a part which is called diencephalon, and the floor of the diencephalon. What is the floor of the diencephalon called, which you know? Hypothalamus. You got the location of the hypothalamus, everyone? So the hypothalamus is the floor of the diencephalon. Okay? And connected to the hypothalamus is a stalk, dundee, stalk, and the pituitary gland. So we say that the PG is the pituitary gland over here. And as it is connected to the hypothalamus by a short stalk, which is called as the infundibulum or the pituitary stalk. Okay? What is it called? Infundibulum or the pituitary stalk. Did you get it up to here, everyone? Okay. So what is the location of the hypothalamus? It is the floor of the diencephalon. It is also connected to the pituitary gland via the pituitary stalk, और pituitary stalk का दूसरा नाम है infundibulum. I hope everyone understood up to here. Okay. Now, later on we'll study the pituitary gland in detail, but just before that, the pituitary gland will have two parts. One will be called the anterior part of the pituitary, and the other is called as the posterior part. A detailed structure which follows will be like this. Okay. Now we are talking about the hypothalamus as a endocrine structure. Now, as I already told you, that the hypothalamus is a part of the brain. Which part of the brain? Diencephalon. And the brain is made up of what? Neurons. And the hypothalamus has many nuclei, which is called collection of cytons. So when there are many cytons, they are collected inside the central nervous system. It is called as the nuclei. And when they are collected outside the central nervous system, the word uses ganglion. Here the word uses what? Nuclei. These are the collection of cytons. They are the hypothalamic nuclei. And these hypothalamic neurons see how they function and how they control the pituitary. Okay. So there are certain neurons in the hypothalamus. So there's a cyton, dendrites, axon. ये सब words याद है ना बच्चों? This is the axon knob. Okay. These axon knobs secrete hormones. Okay. These axon knobs, look at those axon knobs. What are they doing? Secreting hormones. Okay.
and these hormones are carried down to the anterior pituitary with the help of a portal system. So that's when I told you, what is the portal system, Chilo? Yes, in that batch he had told. तो वो नहीं हुआ portal system एग्जाम के राउंड के टाइम पे ये वर्ड नहीं हुआ portal system. Okay, so I'll teach you that first then. Okay, कि what do you mean by a portal system or a portal vein? What we know is that the heart pumps blood into the blood vessels, which are called what, Michelo? Arteries. And these arteries branch up to form what? Arterioles. And the arterioles will further break up. What is the further breakup, Michelo, to form? Capillaries. You remember this point? And what will happen to the capillaries? The capillaries will begin to unite. And what do they unite to form, Michelo? They unite to form the veins. And the veins will carry the blood back to the heart. Right? So what I've told you previously is the artery is a blood vessel that carries the blood away from the heart, and vein is a blood vessel that carries the blood back to the heart. Okay? Sometimes what happens is one particular organ, let me name these organs as A, B, and C. Now this particular organ B wants to immediately give something to organ A. What would be the normal circulation? B will give it to its vein. खुद के vein को देगा. Vein will give it to the heart, and the heart will give it to the artery A. Did you understand the cut? Yes. Organ B will give it to the vein B. Vein B will give it to the heart, and the heart will give it to artery A, and E will give it to the organ. And if you notice, the organs are side by side, but always the vein will give it to the heart. So in certain special cases, a vein arises from the capillary networks, once again forms capillaries, and this particular vein now is carrying the blood directly from one organ to another organ. And such a vein is called as a portal vein. So does the portal vein go back to the heart, or is it a vein which carries blood from one organ to another organ? It carries the blood from one organ to another organ. Such a vein is called as a understood portal vein. In this manner, human body has hepatic portal vein. What do we have? It carries blood from the small intestine to the liver. It carries the blood from small intestine to the liver. So who is B? Liver. Who is B? Small intestine. Who is A? It is carrying blood from the small intestine to the liver. Similarly, I am having a portal vein which is carrying the blood from the hypothalamus to the anterior pituitary. I have got my point? Yes. Another name for pituitary is hypophysis. It's another name for what, Uchilo?
pituitary gland. Okay? So that is why this vein, it's a portal vein. It is called hypophyseal portal vein. What do you call it? हाइपोथैलेमो का मतलब होता है हाइपोथैलेमस से आने वाला. हाइपोफाइशियल मतलब पिट्यूटरी का दूसरा नाम. So it is going towards the pituitary gland. So that is what is called hypothalamo hypophyseal portal vein. So these neurons of the hypothalamus, they are secreting hormones, and these hormones, they enter into the portal vein, and the portal vein will carry them down into the anterior pituitary, and then they will act on the cells of the anterior pituitary. And that is how the hypothalamic neurons will control the anterior pituitary. I hope you got my point. So hypothalamus is a part of the brain called as diencephalon. It is the floor of the diencephalon, made up of collection of cytons which are called as nuclei. These nuclei are nothing but the hypothalamic neurons. These hypothalamic neurons secrete hormones, and these hormones are carried by the portal veins, and then they act on the cells of the anterior pituitary gland. Did you get it, everyone? The second possibility is there are some hypothalamic neurons whose bodies are there in the hypothalamus. उनका साइटोन हाइपोथैलेमस में, लेकिन उनका जो एक्सॉन है it comes down in the posterior pituitary, and this is the axon knob. So where is the axon knob ending, bachlo? The axon knob is ending in the posterior pituitary gland. And once again, where are the cytons present, bachlo? The cytons are present in the hypothalamus, but the axons are coming down, and the axon knobs are found in the where, bachlo? They are found in the posterior pituitary gland. Okay. So there is another group of hypothalamic neurons who secrete their hormones. Do they require a portal vein, or do they directly come into the posterior pituitary? Yes. The hypothalamic neurons are secreting hormones, and their axon knobs, they end in the which pituitary, bachlo? The posterior pituitary. Got my point? So now those hormones, their names are ADH and oxytocin. What are the names? ADH and oxytocin. So these ADH and oxytocin, can I say they are secreted by the hypothalamus? They come down into the axon knobs, and then the posterior pituitary, what should I say? Does it secrete ADH and oxytocin, or does it release ADH and oxytocin? क्योंकि वो उसका real secretion नहीं है, वो उसका real secretion. So hypothalamic neurons secrete hormones which are carried by the axon knobs in the
posterior pituitary gland, and then the posterior pituitary will release which two hormones? ADH and oxytocin. So out of the two pituitaries, which pituitary is under direct neural regulation? And which pituitary is controlled via the portal vein? So can I write that sentence? That posterior pituitary is under the direct neural regulation, whereas the anterior pituitary is controlled via the portal vein by the release of what बच्चों? Hormones. अब यहाँ पे hormones के बारे में और बात करेंगे. Look here, everyone. These hormones. Who releases these hormones? Hypothalamus. These hormones are of two types. One group is called releasing hormones, and the other group is called inhibitory hormones. What are the two groups? Releasing hormones and inhibitory hormones. जब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज करेंगे तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स जाके एक्ट करेंगे on the cells of the which pituitary? Anterior pituitary. And then the cells of the anterior pituitary will begin their secretion. लेकिन जब इनहिबिटरी हार्मोन्स जाके एक्ट करेंगे इसके ऊपर cells of the anterior pituitary, then they will stop the secretion. आया बात समझ में? So what does the hypothalamus secrete? Releasing hormones and inhibitory hormones. These releasing hormones and inhibitory hormones, they act on the cells of the, then the anterior pituitary will start the secretion of the hormones. अगर ये secretion बंद हो गया तो inhibitory hormones आके उसको बंद. एक और statement that all pituitary hormones do not need inhibitory hormones to stop their secretion. हर pituitary hormone को उसका सिक्रीशन बंद करने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन का जरूरत नहीं है. उसका रिलीजिंग हार्मोन बंद कर दो, खुद ब खुद उसका सिक्रीशन बंद हो जाए. ओके, सो हम ऐसे समझा सकते हैं. लाइक से इन द केस ऑफ ओमकार. ओके, ओमकार's daddy gives him 500 rupees every day. सो वो इवनिंग में जाके पार्टी करता है. तो वो जो 500 रुपीज है वो क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है ओमकार को पार्टी करने. आया बात समझ में? आया ना? अब ओमकार के डैडी ने 500 रुपीज देना बंद कर दिया, मतलब रिलीज हार्मोन क्या हो गया? ओमकार की पार्टी में जाना बंद, वो बाहर जाना बंद. मतलब आप रिलीजिंग हार्मोन को बंद कर दो तो उसका सिक्रीशन क्या हो गया? लेकिन मैं एक मिस्चीवियस स्टूडेंट था, तो अगर मेरे डैडी रिलीजिंग हार्मोन नहीं देते थे, मतलब मनी, तो फिर भी मैं बाहर था, तो डैडी को क्या देना पड़ता था? इनहिबिटरी हार्मोन. वो क्या था? एक चारा. तो मेरे केस में डैडी क्या करते थे? पैसा भी नहीं देते थे और एक झापड़ भी देते थे, तब जाके मैं घर उठता. ओमकार के केस में क्या करते थे? पैसा देना बंद करके उसे जाना बंद कर. तो कुछ कुछ हार्मोन्स है उनका रिलीजिंग हार्मोन बंद कर दो तो उनका सिक्रीशन, और कुछ कुछ हार्मोन्स को
एक तो रिलीजिंग हार्मोन भी बंद करो, उसके ऊपर से इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज करो, तब जाके उनका सिक्रीशन। तो क्या सारे हार्मोन्स को इनहिबिटरी हार्मोन की जरूरत पड़ती है? नहीं। किसी किसी का रिलीजिंग बंद कर दो, उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। किसी किसी अलग केस से क्या देना पड़ता है बच्चों? इनहिबिटरी हार्मोन्स। कुछ नहीं सिक्रीट करेंगे, अपना सिक्रीशन बंद कर देंगे। कुछ नहीं करते, उनका मैकेनिज्म थोड़ा अलग, रेगुलेशन। उनको अलग से नेगेटिव कंट्रोल, अलग से इनहिबिटरी कंट्रोल की जरूरत है। वो अपना हार्मोन सिक्रीट करने देंगे, उनको पहला वाला स्टिमुलस ही ना होता। They'll continue the secretions till the time they are being inhibited from doing that. Then their mechanism of translation, transcription will stop. Okay? Is this point clear, everybody? So, which pituitary is under the direct neural regulation? And which is via the portal vein? Which pituitary requires releasing hormones and inhibitory hormones? Anterior pituitary. And which pituitary does release, not real secretion? देखो, कौन सा pituitary सिर्फ release करता है, real secretion नहीं करता? Posterior. क्या है वो दो hormones का नाम? Correct, good. Oxytocin and ADH. Is this everybody clear, everybody? So let us talk about little bit of pituitary gland and we'll combine two things together. But first of all, where is the pituitary gland located? Let's see that. क्या बात करेंगे हम लोग? Location of pituitary gland. So pituitary gland is located, can I say below the hypothalamus? Can I say it is connected to the hypothalamus by a pituitary stalk, which is also called as the infundibulum. And I have told you this point in locomotion that the pituitary gland is present inside the depression called sella turcica of the sphenoid bone of the skull. याद आया मेरा बात? So the pituitary gland is located. Where is it located? Below the hypothalamus. Okay, and it is connected to the hypothalamus by whom? By infundibulum, which is also called as the pituitary stalk, and it is located in the sella turcica of which bone, bachlo? Sphenoid bone of your skull. Clear, everybody? Okay. And pituitary के आगे से आपकी दोनों आईज की नर्व्स क्रॉस होती है, ऑप्टिक कायास्मा होता है। आपके राइट आई की जो नर्व है लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जाती है, लेफ्ट साइड की जो आई की नर्व है कहाँ जाती है? राइट साइड। वैसे क्रॉस कर देंगे उसको, ऐसे क्रॉस कर, और ये क्रॉसिंग को कायास्मा बोलते हैं, उसके पीछे ही पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है तो किस पे फोर्स गिरेगा बच्चों? कायास्मा पे। तो उससे ब्लाइंडनेस का एक सिम्टम दिखता है। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन का ही एक छोटा सा पार्ट है। लोकेशन समझ में आप सबको? पक्का? Shall I continue? Yes. Okay. See, during its development, what happens is, when a brain is developing, वो एक छोटे से पार्ट को डेवलप करता है। उसका नाम तो नहीं है, उसको न्यूरल बड बोलते हैं। तो ऐसे ही देखो कि ब्रेन में से एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? डेवलप। एंड व्हेन योर माउथ कैविटी इज डेवलपिंग, बक्कल कैविटी है ना, वहां से भी एक आउटग्रोथ आता है। Okay, and this breaks and joins. Okay, and together they will form what?
pituitary gland. The part of the pituitary gland that is developing from this side, neural side, it is called neurohypophysis. क्या कहते हैं उसको? Neurohypophysis. And the part which is developing from the buccal side, it is called adenohypophysis. क्या कहते हैं उसको? Adenohypophysis. समझा कि नहीं आप सबको? So I'll say that the pituitary gland will be divided into how many parts? Two parts. What are they? Adenohypophysis and the neurohypophysis. कितने पार्ट्स हैं बच्चों लोग? दो. कौन से? Hypophysis and the neurohypophysis. Adenohypophysis develops from which part? The buccal ectoderm. And this one develops from the neural part. Okay? Yes. The adenohypophysis is made up of the largest part of the pituitary, which is called the pars distalis. How does it go? And the pars intermedia. Which part? Pars intermedia. There is one more part not there in the inside text. This is called pars tuberalis. How does it go? Pars tuberalis. Inside is mentioning that adenohypophysis is made up of how many parts, Bachalo? Two parts. What are the two parts? Pars distalis. And the other part is what, Bachalo? Pars intermedia. Okay? Clearly everybody? Yes. Adenohypophysis कितने parts हो गए? दो. कौन से? Pars distalis, pars intermedia. ये वाला पार्ट कौन है? Part distalis. Okay? In humans, the pars intermedia is merged with pars distalis. मतलब humans में वो rudimentary है, नहीं के बराबर. आया बात समझ में? इसीलिए pars distalis is commonly called anterior pituitary. Commonly called what, Bachalo? Anterior pituitary. समझा? Pars distalis commonly anterior pituitary क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसका भी सबसे बड़ा पार्ट है. Actually anterior pituitary कौन है? Adenohypophysis. But adenohypophysis के बाकी के जो दो पार्ट्स हैं, कौन? Pars tuberalis और pars intermedia pars distalis के मुकाबले बहुत ही छोटे हैं. इसीलिए कॉमनली हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस का जो पार्ट है, कौन सा? पार्स डिस्टालिस, उसी को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी. बराबर है? वन एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी कौन है? एडिनोहाइपोफाइसिस. ये उसके कितने पार्ट्स है? तीन. कौन से? पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरस. व्हाट बाय पॉइंट? ये सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? पार्स डिस्टालिस. ह्यूमन बीइंग में पार्स इंटरमीडिया क्या है? नॉन फंक्शनल, मर्ज्ड. इसके साथ पार्स डिस्टालिस. पार्स इंटरमीडिया किसमें फंक्शन है? मतलब लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जहां पे वो रिलीज करता है एक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या नाम है हार्मोन का? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलर. और हमारे में एमएसएच पास डिस्टालिस क्रिएट करता है. ह्यूमंस में कौन सी क्रिएट करता है? पास डिस्टालिस. लोअर एनिमल्स में कौन रिलीज करता है एमएसएच? पार्स इंटरमीडिया. आया ये बात समझ में आप सबको?
अब कौन है बच्चों? Neurohypophysis. And the neurohypophysis will be commonly called which pituitary bachlo? Posterior. यानी उसको posterior. As on now सबको. So who is the posterior pituitary? Neurohypophysis. And it is made up of parts like the pars nervosa and the infundibulum. Okay. So what are the two parts of the neurohypophysis? Pars nervosa and the infundibulum. Okay. NCERT only mentioned what? Neurohypophysis is commonly called what? Posterior pituitary. And the posterior pituitary releases which hormones? Two hormones, ADH and oxytocin. Did you get it, everybody? Yes. So hypothalamus is a part of your brain. Which part of the brain? Diaphragm. It is the floor of the diaphragm. It is connected to the pituitary gland via stalk, which is called as the infundibulum or the pituitary stalk. Pituitary has got how many parts? Two. Posterior and Anterior. Anterior is controlled by the hypothalamic neurons by the secretion of which are carried by the portal vein. These hormones can either be releasing hormones or inhibitory hormones. Releasing hormones will cause the secretion. Inhibitory hormone will stop the secretion. But what about the posterior pituitary? It is under the direct neural regulation because the hypothalamic neuron, their axon knobs will pass through the infundibulum, their axons will pass through the infundibulum, and the knobs will end in the posterior pituitary. They secrete ADH and oxytocin. आया समझ में? आया सबको? ये वाला पार्ट समझ में आया? ओके. पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन तो समझ में आ गया सबको भी? अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के टाइम हम लोग कितना पार्ट देखे हैं? Neurohypophysis or true or false? Adenohypophysis is commonly called as anterior pituitary. True or false? तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है? Pars distalis is commonly called anterior pituitary. ये भी ट्रू है, वो भी ट्रू है. Adenohypophysis is the actual anterior pituitary. But commonly who is called as the anterior pituitary? Why? Because it is the largest part of adenohypophysis. What is the other part of the adenohypophysis? Pars intermedia. But in humans it gets merged. So what remains is the pars distalis, which is commonly called anterior. And who is commonly called posterior pituitary? Neurohypophysis. What are the parts of the neurohypophysis? Pars nervosa. Got it? What are the two hormones released by the posterior pituitary? But who synthesizes them? Hypothalamic neurons. Clear है यहाँ तक सबको? पक्का? Tell me what are the parts of the adenohypophysis again? Pars tuberous. Tuberous नहीं किया. Pars distalis and pars intermedia. But who is in humans rudimentary, not well developed? बराबर है. So what are you left with now? So pars distalis becomes the largest part of the. That is why it is commonly called what? And posterior pituitary किसको बोलते हैं हम लोग? बराबर है. Actual anterior pituitary कौन है? ये आइडिया समझ में आया सबको? Clear everybody? Any questions there? Copy this down and we'll continue. Yes, Neil guy, what do you want? Huh? कुछ भी बिना biology का कुछ भी पूछते रहता है ना?
Okay.